You are the first? Then say no. Good morning. Okay. Or you want any energy drink for that? Okay. So myself, Pushti Mandani, Myself, Gohiriti. cordially welcomes you to the 75th Independence Day celebration. Being Indians, we should feel proud to be a part of an independent nation, having freedom of speech and expression. As we celebrate the 75th Independence Day celebration, the nation is gearing up for the grand celebration on the theme Nation First, Always First. As we commemorate the 75th year of our independence, let's remember our great leaders, national leaders, and freedom fighters, and those who sacrificed their lives in freedom struggle. Respected Father Josie, Principal Father Justine, Sister Teensy, beloved teachers, and dear friends, let's begin our program invoking God's presence by a prayer dance. Respected Principal Father Josie, respected Vice Principal Father Justine, respected sister, teachers, and all my dear friends. Good morning, everyone. Today, we are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and to celebrate the 75th Independence Day of our country. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of the anguish of being enslaved under the colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memory. Hence,
same. The idea of being an independent nation where sovereign power lies with us places a huge responsibility on our shoulders, and the significance of its beautiful story that India has gained the respect from the world for the democratic way chosen by it, and we can proudly say that India has never invaded any country in its 10,000 years of history. On this occasion, our thoughts turn first towards the Mahatma Gandhi, the man behind struggle for the freedom, and the martyrs who made supreme sacrifice for the country's liberty. And we are also reminded of the relentless struggle of our great patriots who liberated our motherland from the colonial rule. Gandhiji was seeking liberty from what? Foreign rule and the indigenous social chains that has long incarcerated our society. There's a big celebration each year in New Delhi at Rajpath, where the national anthem is sung after the Prime Minister hosts the prayer. This day is an abundance of emotions. It reminds us of the pain of being enslaved, it defines sacrifice, and it gives us an example that some wars can be fought with non-violence, and of all the things that makes us cherish and values the freedom we have today. It is our responsibility as a proud citizen of this country to sincerely perform their duties and to progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifice of ancestors in our mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. And I take this opportunity to wish everybody a very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind. से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम जो ये घर सोना सोना है मैं कहा चाहती बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा पिलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम तुझे सलाम अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना Thank you guys for your beautiful dance. And we are celebrating the 75th Independence Day. But the big question is, are we really free? What are problems our country faces today? Let's watch a skit performed by class 7 and 8 students. Thank
माइक चालू है। क्या वो मेरा हक नहीं था? बाबू बाबू अरे छोड़ मुझे। वो भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है सब पढ़ रहे लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ सकता बाबू क्या स्कूल जाना है तुझे स्कूल वाले क्या तुझे मुफ्त में पढ़ाने वाले हैं स्कूल जाने के लिए पैसे चाहिए पैसे जो तेरे बाबू के पास नहीं है अगर अपना पेट भरना है ना तो जा जाके दादा में काम कर नहीं मुझे पढ़ना है क्या? रुक जा यार तू जा इधर से यार उधर से तो बता। हाय डैड अरे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? हमारे दोस्त क्या पार्टी थी यस वी हेड अ लॉट पार्टी? बट पार्टी तो शाम को भी हो सकती थी। अब स्कूल कैसे जाओगे? वी आर वेरी टायर्ड वी कांट गो टू स्कूल यस मैडम, स्कूल जाके अब क्या ही पढ़ लेंगे। अरे मेरे लाल, ओके यू गो टू स्लीप एंड एंजॉय। यही होती है आज़ादी, जहाँ गरीब परिवार के बच्चे जो चाह कर भी नहीं पढ़ सकते और दूसरी तरफ अमीर परिवार के बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसे पार्टी और घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हैं। क्या यही है आजादी जहाँ गरीब गरीब और अमीर हो जाता है भारत माता की भारत माता की जय। अगर मैं होती तो पिता ही लगाती, अगर पिता लगाते तो आज हमारा देश कितनी आजादी कर चुका होता। माता जी अरे ओ माता जी सुनिए बोलो। अब वो जो चंदू है ना हाँ? उसके घर में बेटी आई है क्या बेटी आई है? चलो बधाई देकर आते हैं। अरे माता जी आपके लिए खुशखबर है क्या? हमारे देश को आज तो 75 साल हो गए हैं देश तो कब का आजाद हो गया, पर थोड़ी तरक्की कर लेते तो अच्छा रहता। अरे माता जी दूसरी बात मैं कहना ही भूल गया क्या? और वो जो लड्डू है ना हाँ? उसके घर में बेटी आई है अगर हर जगह बेटी की बधाई दोगे तो भगवान तो बेटा देना भूल ही जाएगा। माता जी आजकल बेटा और बेटी को तरक्की क्या रखा है बेटी ने क्या देश की तरक्की ही की है। मनीषा Our first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, once said that you can insight the condition of country by looking the status of instrument. But unfortunately, the present scenario for countries to diligent, we have only 927 women out of 1,000 government. ऐसे नहीं मिलेगी मदर टेरेसा ऐसे नहीं मिलेगी इंदिरा गांधी अरे क्या ढूंढ रहे हो कल्पना चावला किरण बेदी अगर बनाना है अपने देश को आजाद तो पहले बेटियों को आजादी दो शाइना मिर्जा, शाइना नेहरा, प्रतिभा पाटिल, भारत की शान है, आजाद भारत की शान Sorry, है। हाँ, भाई। असली आजादी तभी मिलेगी जब बेटी का जन्म होने पर कितनी खुशियाँ बांटी जाती हैं, जो बेटे के जन्म में बांटी जाती हैं। Present report of our country is out of 1,000, only 829 girls go to the school and remaining they don't go because they are poor and they have to earn money. आजादी तब होगी जब कोई लड़की शहर और मोहल्ले में बिना डरे घूमे। आजादी होगी जब लड़कियों को पहनावे से नहीं और इज्जत से देखा जाएगा। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए अब हमें हमारा सोच और विचार बदलने चाहिए Students for the most inspiring performance. Now I would like to welcome Vrinda to present a patriotic kavita on this auspicious occasion. कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आदरणीय मुख्य शिक्षकगण, भाविकों और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज इस 75वें स्वतंत्रता के दिन पर सुनते हैं एक कविता जो हमारे दिलों में देशभक्ति की मिसालें जला देगी। कविता है बलिदानों की,
कविता है उन इंसानों की जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना खून बहा दिया। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, ये दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, ये दाम चुकाए वीरों ने। जो शुरू हुई सन 57 में, सन 47 तक शुरू रही। मारे गए अंग्रेज कई, वीरों के रक्त की नदी बही। मजबूत किया संकल्प था उनका भारत माता के नीरों ने। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। देश की रक्षा की खातिर थी रानी ने तलवार उठाई। पीठ पर बांधा बालक को, पर जंग में न थी पीठ दिखाई। कुछ ऐसे हुई शहीद की जैसे, त्यागे है प्राण रणधीरों ने। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। उधम सिंह और मदन लाल ने खूब ही नाम कमाया था। घुसकर लंदन में अंग्रेजों ने उनका अंजाम दिखाया था। यूं मातृभूमि से प्यार किया जैसे खुदा से किया फकीरों ने। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। जोश ही जोश भरा था लहू में, मजबूत शरीर बनाया था। हालत पतली कर दी थी, अंग्रेजों को खूब डराया था। आज़ाद वो था आज़ाद रहा, न पकड़ा गया जंजीरों में। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पर जब झूले। बजा भी गुल्फिर आज़ादी का, हृदय में सबके उठे शोले। लोगों के खौफ से डर कर ही इन्हें जलाया सतलुज के तीरों पे। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। ये गर्व मुझे उन वीरों पर, भारत माँ के जो बेटे हैं। वो जान से प्यारा वतन हमें शिक्षा इस बात की देते हैं। इसी आज़ादी की खातिर ही दी है जान देश के हीरों ने। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। धन्यवाद। इस कविता के बाद मैं चाहती हूँ कि छोटे बच्चे अपनी खुशी जताए, इसलिए लेकर आ रहे हैं अपने डांस परफॉर्मेंस। माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी। भग भग प्यारे दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता चढ़ता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना गले गले
Thank you students for your lovely performance. Now judges, please note we continue our solo song competition and the next participant is Sakshi. देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही है जो बाण फेंक के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर वो वजन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिले जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिसके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संत निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज है, जियाले है, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले है। पहचानो हमें गौर से, हम इंडिया वाले। धन्यवाद। Great job, madam. Our next item is a solo. महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। Thank you, Hat, for your wonderful performance. We continue our solo song competition. Judges, please note the up for you.
First of all, let me wish you all the happiness and joy of 75 years of independence that is celebrated today. This year is special because we reached 75 years of independence. And that is the reason our Prime Minister announced that Ghar Ghar Pe Tiranga. Every house should have a flag, national flag. That is the motto of the celebration of 75 Independence Day. And today we see so many different kinds of caliber and performance on the stage. Let me first of all appreciate the choreographers, the producers, and the performers of today's program. Staff, students, and all those who prepared them. First of all, a big congratulations to all of you. When we celebrate independence, our country is very, very unique in its celebrations, in its authenticity. That is the reason India stands out in the world. Even looking at our tricolor national flag, which reminds that we are different in different ways, but united in our uniqueness. Do you know what are the colors in our national flag? What is the first one? It is first color is saffron color. Saffron color means what? Courage and strength to sacrifice our own life to the mother country. So that reminds you all or me that I am supposed to offer my strength, my courage to be sacrificed for the country. This is a reminder that gives you this saffron color for each citizen of India. That he or she is supposed to sacrifice his or her life for the country. That reminds the first color. What is the second color? White. White reminds you what? Okay. So we are different, unique, but united. We have so many differences: language, caste, creed, religiosity, even the different style of costumes. Yet in all this we are united with our uniqueness. So the white color reminds you that we are united in peacefulness. So all of you are sitting together here. But each one of you is unique. Each one of you is different, but united in peace together. That's the reason St. Mary's family has many, many differences, yet united in one name. So too, we all Indians have that same uniqueness, that is, we are united with our uniqueness in the white color. What is the third color? Green. Green. Green reminds us with so many unique differences.
It can be said as fertility, growth, and many, many things like that. So we together develop our country in the same color, green, that will make our country always fresh in development and growth. So we have a great responsibility when you hold this tricolor Indian national flag. All of you held the flag that day, no? And today and on the Independence Day also you are supposed to hold the national flag with you. When you hold it, you have a great responsibility to be united in these three colors. Giving your strength, your courage, united in peace, togetherness in growth. This is what the motherland demands from you. When the freedom fighters, they did not keep anything for themselves, given up everything to get the freedom for our country. That is the reason today you have all kinds of freedom of speech, life, and then even to travel everywhere. You have a freedom to live. So use this freedom of living and contribute greatly to the development of our nation. If you are a responsible citizen, the first thing come to you is, I will be responsible to live wherever I am. When I am in my home, I should be responsible living at home. When I am outside, I should be a responsible person, disciplined to keep the discipline of the society. When you are in the school, you should be a disciplined student to keep the discipline of the school. So altogether, this celebration demands from you to be disciplined and responsible to become a great citizen of your country, that is Mother India. So I wish you all a great celebration of 75 years of independence. This year opens another door to 76th year of our independence. Next year should bring a different development from you, each one of you. So begin to develop yourself, contribute something to the country so that you are called a responsible citizen. I'm very happy that today we have a different and wonderful performance of the Independence Day. I thank everyone, especially the performers, the producers and the choreographers and all the audience. Thank you very much and have a beautiful day. Thank you, Madam, for your inspiring words. कोई माने ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे हैं पे हम नाज है
ये देश है वीर जवानों का, लड़कों का, मस्तानों का, इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। Gracious morning to our beloved Principal Father Josie, Vice Principal Father Justin, respected teachers and dear students.
It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who made this program a very beautiful one. We know that a program like this cannot happen overnight. The wheels started rolling many days before. And today, we beautifully completed all the items. 2 weeks before, our principal, Father Josie, invited us, the committee members, to his office and guided us and asked us about different programs which we are going to conduct, and he also guided us, and that helped us to execute this program in a better way. And today, he also given a beautiful message about Independence Day, the uniqueness of our country, and all that messages, I'm sure, help you to endeavor your future in a beautiful way. So I take this opportunity to thank Father Josie on behalf of me and the committee members. I also take this opportunity to thank Father Justin, because we know that he is always with us, among us, always moving around us, because he is very particular about discipline. And I'm sure after his coming here, there's a lot of difference in the matter of discipline. Those children were moving here and there for different programs. He always watching them, guiding them. And of course, he's also helping in different programs of this Independence Day. So I take this opportunity to thank Father Justin also on this occasion. Now my duty is to thank our committee members, because they help the students to perform different activities, and also all our staff members. They help the students in keeping discipline and help us in sound system and all these things. So I extend my sincere thanks to all our teachers who helped us in different ways. And last but not least, I also thank all the students who very well maintained discipline and attended the program and encouraged the participants in your own way. So thank you very much for each and every one of you who are here. Thank you very much. Thank you, Sadhu sir, for your wonderful words. Now I would like to welcome Roshni teacher on the stage to announce the result of solo song competition. A warm good morning to one and all present here. I am here with the results of solo singing competition just now we completed. The first prize goes to from junior session, Deepu Daya, belonging to Red House. The second prize is awarded to Gohel Kushi, Green House. The third prize goes to Udeshi Vyom from Blue House. Now, for the sub-juniors, the first prize, Joshi Dharam from Green House. And the second prize is awarded to Malavya Field from Blue House. And the third place, Kushwa Om Singh, Yellow House. Congratulations to all the players and thank you to all the in-charges who prepared them well. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा पूज्य
उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे